ओम सप्तमो अध्याय ध्यानम ध्यायेयमृत्नपीठे शुक्लकल्पटं शृण्वते श्यामलांगे नष्टे काग्रे सरोजे शशिकला धरावल्के वादयन्तीं काहाराम्बद्धमाला निमति विलसचोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शङ्खपात्रां मधुरमुदामदां चित्रकोभाशिराभम्। ॐ ऋषिरुवाच ॐ अज्ञाप्तस्ते ततोदित्या चण्डमुण्डपुरोगमः चतुरंगबलोपेतो ययुरभ्यदताजुधा दिदृष्टते ततो देवी मिश्यासाध्या विवस्थितां शङ्ग्यस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काश्यने ते दृष्ट्वा तां सदा दग्धो मुद्यत्तं चक्रुरुद्धतः आकृष्टचापासिनादास्ते तान्ये तत्समीपगः ततः कोपचकारोच्चै रम्बिका तारेण प्रते कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णम् अभूतदा भुक्रुटे कुटिला तस्या ललाटफलकादृतं काले करालवदना विनिष्कान्ता शिपाशिनी विचित्रखण्डग्वधारा नरमाला विभूषणा दीपे चर्म परिधाना सुखमासे साति भैरवा अति विस्तार बदना जिह्वाललभेषणा ओम निगमना नयना नादापुरितदिङ्मुखा सावेगेनाभितपतिता घातयन्ते महासुरान् शन्ये तत्र सुरारेणा मभिच्छत्यन्त तद्बलम्। ओम प्राणिग्राहा कुशाग्राहे योधघंटा समन्विता समादायेकहस्तेन मुखे शिक्षेपवारणान् तथैव युद्धं तुरगरे रतं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशने सर्वैतं तिभैरवा एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामत चापरं पदेनाक्रम्य चैवान्या मुशूर्षाण्योपमोथयत् तै मुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तथासुरे मुखेन जग्राह रोषां दशनेर्मर्मिथायपे बलीनां तद्बलं शर्व मशूराणां दुरात्मना मर्यादावच्छयाचान्या नन्याचाताण्डयत्तथा अशिना निहता केचित् खड्गवाङ्गिताडिता जग्मो विनाशमसुरा दन्ताग्राहा वितस्तथा छड़ेन तद्बलं सर्व मशूराणां निपातिता दृष्टा चण्डो विद्राव तां काले मतिभेषणा सर्वर्षे महाभीम भीमाक्षेता महासुरः छादयामास चक्रेश्च मुण्डः चित्ते सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विश्वस्मानि तन्मुखा बभूर्यर्थार्कबिम्बानि शुभोनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमभैरववादिनी काले करालवक्त्रान्त द्रुतश्चोदृशतोज्ज्वला उत्थाह च माहसीहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु हिरस्तेनास्निच्छिता अथ मुण्डोऽभ्यधावतां दृष्टा चण्डनिपातितं तमप्यापायतो भूमो सा खड्गवाङ्गविभीतं वृषा हतशेषं ततः सैन्या दृष्टा चण्डनिपातिता मुण्डं च सुमावीर्यं दिशो भेजो भयातुरं शिरश्च कालिश्च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डः सास मिश्रमभ्यचण्डिकां तमया तवात्रोपहन्तो चण्डमुण्डो महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शम्भो निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषुर्वाच तावानेतो ततो दृष्ट्वा
चण्डमुण्डो महासुरा उवाच काले कल्याणे ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वां त्वम् उपागतः चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओम। शतमोऽध्यायः सम्पूर्णः। अष्टमोऽध्याय प्रारम्भ। ध्यानम्। ओम अरुणाकरुणातरङ्गिताक्षे धृतपाशा कुशबाणचापहस्तम् अणिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्वेव विभावये भवानीम्। ओम ऋषुर्वाच चण्डे च निहते दत्ते मुण्डे च विनपातिते बहुलेशे च सन्न्येषो चैत्वेषु सुरेश्वरः ततः कोपराधेन चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वबलैर्दत्या खड्गशीतिरुदायुधा कम्बुना चतुर्शीते निर्यान्तु स्वबलैर्वृतः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धर्माणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरता मौर्यः कालकेयस्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यातो अज्ञादुरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपते शुम्भो भैरववासना निजगाम महासैन्या सहस्रे बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनेन पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतेवं कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्वदम् दम्बिका चोपबिभ्यत। ओम घण्टास्वनेन तत्र दम्बिका चोपबिभ्यत धनुर्जाया सिंहघण्टानां नादापुरितमुखा ओम निनादे भेषणे काले ये विस्तारनातना तम निदानमपोश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवे सिंह तथा काले सौरेशे परिवारिता एतस्मिन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मते वीर्यबलान्वितः ब्रह्मोष विष्णूनां तथेन्द्रश्च च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्कृष्य तदुत्पश्चात् चण्डिकाजुजो यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहना तद्देव हि चतुर्युक्तं शूराना युद्धमाययो हंसयुक्ता विमानाग्रे साक्षशत्रुकमण्डलो आयता ब्राह्मणः शक्ति ब्राह्मणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणे महाहेललया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्यायोदत्या नम्बिका गोरूपिणी तथैव वैष्णवे शक्ते गरुडोपरि संसिता शंखं चक्रं गदां श्रांग खड्गहस्त्वा भयोपायो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति सम्यायौ तत्र वाराहे बिभ्रते तनुं नारसिंहे नरसिंहस्य बिभ्रते दृश्यतं वपो प्राप्ता तत्र शताक्षेप प्रक्षिप्तं छनसंहसे ओम वज्रहस्ता तथैवन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्र तथैव सा ततः परिवृता भेने विरसानो देवशक्तिभिः हन्तय हन्यतामसुरा शीघ्रा मम प्रत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरातो निष्कृष्टातिभीषणा चण्डिका शक्तिरुग्रा शिवा शतनिनातिनी सा चाह ध्रुमजटिला मीशानं पराजिता दूतं तो गच्छ भगवन् पार्श्वशुम्भनिशुम्भयोः बभ्रुशुम्भनिशुम्भं च दानवातिवर्गतो ते ये चान्ये दानवा तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिद्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा युवं प्रयात पातालं यदि जीवितमुच्युता भवा
बलाबले पातं चेवन्तो युद्धकाच्छिड़ा तद्गता च तृष्यन्तो मचित्वा पितितेन यतो नियतो यो तेन या दिव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेशे ततः सा विख्यातिमग्गता तेऽपि श्रुत्वा वचो दिव्या सर्वाख्याता महाशुरः अमरसा पुरिता जगमो यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्त्याष्टविष्टिभे वैद्यारुद्रामातस्ता देवी ममरारयः सा च तान् प्रहीतान् व्राणचूलशक्तिरस्पराधना शिच्छेदालिलयाध्याम धनुर्मुक्ते महर्षिभे तस्याग्रस्त तथा काले शूलपातिविदारितान् खड्वापन्तुतैराणा शरीकुर्वन्ति व्यच्चरा तदा कमण्डलो जलाक्षेपा हतवीर्यान् हतोत्तजः ब्राह्मणे चाकारणच्चुन्नु येन येन स्वधावते ब्राह्मणे च कारणो चत्रो न येन येन सधावते माहेश्वरी त्रिशूलेन यथा चक्रेण वैष्णवे दैत्याजङ्घान कौमारे तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रे कुलेशपातेन शतसो दैत्यदानवा पैतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिररोगा प्रवेशना तुंडप्रहार विस्तारता दृष्टाग्रछत्तवच्छसः वाराहमूर्त्या नित्या चक्रेण च विदारिता नखे विदारिताश्चान्या वक्ष्यन्ते महाशुरान् नारसिंही च चाराज्यो नादापूर्णदिगम्बरा चंडाहटा शैरसुरः शिवदीति विभूषितः पेतुः पृथिव्यापतितस्तां श्रख्यादात्मास्तदा इति मातृगणः क्रुद्धा मत्यन्तं महाशुरान् दृष्टाभ्योपायो विद्धे धनेर्दिदेव सैनिकाः ओं पलापयन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धोमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महाशुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमो पत्यस्त शरीरतः समुत्पत्ते मेदिन्या तत्प्रमाणस्तदाशुरः जुज्जुदे सगदापाडे शेदशक्त्या महाशुरः ततः चन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलेशेनाहतस्त्यासु बहु शस्त्रावशोडितां समुस्तस्तो ततो योधा तुस्त्रातस्तपराक्रमा यावत्तः पतिता तस्य शरीरास्तभ्यवृद्धत तावन्तः पुरुषा जातास् विक्रमा ते चापि युद्ध तत्र पुरुषा रक्तसंभवा सम्मात्रे भृत्युग्रा शस्त्रपातातिभीषणः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषा ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रेणाभिजघानः गदया तडयामास इन्द्रे तं सुरेश्वरम् वैष्णवे चक्रभित्रस्य रुधिर्वस्त्रात् संभवे सहस्रशो जगद्व्याप्ता तत्प्रमाणे महाशुरः शक्त्या जङ्घान कौमारे वाराहे च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेन रक्तबीजं महाशुरं स चापि गदया दैत्यः सर्व एता हनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरान् तस्य बहुधा शक्तिशूलाधिभुर्भुवे पपात यो वैरक्तो गणस्तश्चात्ततोऽसुरः तस्यासुरासभृत्य सुरैरपि सकलं जगत् व्याप्तमासा ततो देवा भयमाजामरुन्तमम् तान् विष्णासुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु
मत्स्यस्त्रपाद संभूतान् रक्तबिंदो महासुरान् रक्तबिंदो प्रतिच्छत्वं वत्रेणानि न वेगिना वक्ष्यन्तिं चरणे तदुत्पत्रा महासुरान् एवमेषं क्षयं दैत्या क्षीररक्तो गमिष्यति वत्स्यमाणास्त्वाचुग्रा न चुत्पस्त्वे चापरे इत्युक्ता ता ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काले जगृहे मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोडितं ततो सावजङ्घन्नाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदना चक्रे गदपातोर्वापपि ओम तस्याः तस्य देहातो बहुशुस्रावशोडितां यतस्तत्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे संगता यस्यां रक्तपातान् महासुरः ताश्च खादात चामुण्डा पपोतस्योच शोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणेरस्य विवर्षभे जङ्घान् रक्तबीजं तं चण्डमुण्डा पितोषिणं सपपात महे पृष्ठे शस्त्रसं समाहत निरक्तश्चं महेपालं रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतलावा वा पृष्ठदशा नृप तेषां मातृगणा जाता तस्या समृद्धोद्भव। ओम जय जय श्री पुराणे अष्टमोऽध्याय। ओम नवमो अध्याय ध्यानम्। ओम द्वन्द्वोक कांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशोच वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणं इन्दुसकला भरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। राजा उवाच विचित्रमिदमाख्यात भगवान् भवता मम दैत्याचरितं महात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयच्छेत्तामह्यं श्रोतं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भसातिकोपनः ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीज निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतवन्येषु चाहवे हनन्मानं हाशन्य विलोवाक्यमर्षमुद्धान् अभ्यधावत् शुम्भोऽथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्थस्योश्च महासुरा शतपृष्ठोतपुष्ठा कुद्दाहन्तु देमुपायौ आजगाम महावीर्यं शुम्भोऽपि स्वबलभृतः निहन्तो चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धं तुमाप्तुभे ततो युद्धमते वासे देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सर्वर्षं मते उग्रं मेघयोरिवर्षतो चिच्छेदास्तदाच्छानास्ता ताभ्यां चण्डिकास्तशरोत्करे ताडयामास चाङ्गेशो शस्त्रोघेर सुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्वं चादाय सुप्रभम् अताड्य भूमि सिंहं दैत्यावाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी शूरप्रेडासु सुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्म चास्या च चन्द्रकं छिन्ने चर्मणे खड्गे च शक्तिं शिक्षे पशोऽसुरा तमायस्य दुधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्धमातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानव अयात्वं मुष्टिपातेन देवे तच्चाचुर्यत अभिध्यायं गदासोऽपि शिक्षेप चण्डिका प्रति शापि दिव्या त्रिशूलेन भित्राभस्वं त्वमागता ततः परस्तोतमायान्तं दैत्यपुमङ्गम् आहत्यं देवी बाणे घैतात्यं पतय भूतले तस्मिन् पतिते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भाति अन्तिम सत्कुद्धा प्रयोहन्तुमम्बिकां शारतस्ततथा युच्च गृहे ममायुधे भुजैरष्टाभिरत्तोलय यभ्यासाशेष बभो नभो तमायान्तः समालुक्यं देवी शङ्खमवादयात्
जया शब्दं चापि धनुषं चक्रारातीव दुस्सहं पूरयामास कुम्भो निजघण्टाश्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिना ततः सिंहो महादाने तस्याजिते भमामदे पूरयामासाय गमनं गा तथैव दिशो दशं ततः काले समुत्पत्य गगनं समतामडायत कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्शस्नास्ते तिरोहिता अट्टाहाससमं शिवं शिवदूते चकारः तैः शब्देषु राष्ट्रेषु शुम्भकोपं परं यो दुरामिष्ठ तिष्ठेति व्याजहारम्बिका यदा तदा जेति भियतं देवेराग्निसंस्थिते शुम्भो नागस्य या शक्तिं मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वहे कुट्टा भाषा निष्ठाकुलो महोत्कला सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातुनीश्वघोरो निजवान वनिपेतो शुम्भा मुक्तावचरा देवी शुम्भस्त प्रतिचाचरान् शिच्छेद स्वरसरेरुग्रे शतशोथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदा विहतो भूमो मुच्यतो निपतातवान् ततो निशुम्भय सम्र प्रायचेतमात्कारकमो आजघान शरीरदेवी काली केसरीडा तथा पुनश्च कृत्वा बाहो नामयुतं धनुजेश्वरा चक्रायुद्धेन दितिच्छदा दयामाशं चण्डिकां ततो भगवते क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी शिच्छेत्तानि चक्राणि स्वशरेषा काश्यतान् ततो निशुम्भुवेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तो दैत्यसेना समावृता तस्यापुते वासो गदं चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाशदे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भो मरार्दनं हृदि विविध्याय शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिकां विन्त्रस्य तस्य शूलेन हृदयात्रेः श्रुतोपरः महाबलो महावीर्यं तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्या निष्क्रामतो देवी प्रहस्तस्य स्वप्नतता शिरच्छित्तेद खड्गेन ततो शाङ्क्वत्युद्भवे ततः सिंहशखाग्दोग्रा दृष्ट्वा चूडशिरोधरान् असुरास्ताभ्यां तथा काले शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिने भिन्ना केचिच्चैत्रो सुमहासुरा ब्राह्मणे मंत्रपूतेन त्वय्यज्ञ तुन्यान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन वित्रापेतुस्तथा परे बाराहतुण्डघातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णवादानवाकृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्रा विमुक्तेन तथा परे केचिद्दिनेषुरासुराः केचिद्दृष्टा महाहवात् बच्चिता चापरे काले शिवदूती मृगाधिपः। ओम जय जय श्री श्रावण के मन्वंतरे देवी महात्मे 9मो अध्यायः। 10मो अध्याय प्रारंभ। ध्यानम्। ओम उत्पत्ते मरुचिरां रविचंद्रवहनिं नेत्रां धनुषशरयुता कुशपाशशूलं रम्ये भुजश्च दहते शिवशक्तिरूपां कामेश्वरे हृदये भजामि धृतदिन्दुलेखाम्। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भात्रं प्राणसमन्वितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो विर्च्युत। ओम बबाबले पादुष्टे तं मा दुर्गे गर्मवाह अन्यस्या बलस्तृत्य युध्यस्य यातिमानिनी। दिव्यौवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमं येव विश्यन्तो मदिभूतयः। तथा समस्तस्ता देव्यो ब्राह्मणे प्रमुखालयं तस्या दिव्यास्तनो जग्मो
रेकेशावासी तदाम्बिका दिव्य उवाच अहं विभूत्या बहुवीरे रूपे यदा स्थितां ततः संहृतं एकेव तिष्ठाय ज्योष्ठिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं दिव्याशुम्भस्य चोभयो पश्येतां सर्वदेवानां मशूराणां च दारुणां सर्वर्षेषिते शस्ते तथास्त्रे चैव दारुणे ततो युद्धमुद्बुद्ध्य सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यशस्त्राणि शततो मुमुचे यथान्विका भवञ्जातानि दैत्येन्द्र शस्त्रप्रत्याघातकृत्युभे मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी वञ्जालिलयोग्रेः काङ्ग्रोच्चारणान्दिभे ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादेत सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुच्छेदेच्छेदचेत्खुदिभिः छिन्ने धनुषु दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे शिच्छेदा देवी चक्रेण तां यस्य करे स्थितां ततः खण्डङ्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुतम् अभ्यधावत दा देवी दैत्यानामधिपेश्वर तस्यापतत एवासो खड्गं शिच्छेद चण्डिकां धनुर्मुक्ते शितर्वाणे शर्म चाकरामलम् हताश्च स तदा दैत्र शिच्छन् धन्वा विसारथे जग्राहमुद्गरं घोरं मम्बिका निदधोऽन्ततः शिच्छेदात् पतत्तस्य मुद्गरं निशिते तथापि सोऽभ्यधवतां मुष्टिमुदस्य वेगवान् स मुष्टि पातयामास हृदये दत्तपुमङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्तताडयात् तलप्रहाराभीतो निपपात महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोस्थिता उत्पत्त्या च गृहोच्चैव देवी गगनमस्थिता तत्रापि सा निराधारा जिज्जुदे तेन चण्डिका नियुद्धं केतदादत्य चण्डिका च परस्परं चक्रन्तु प्रथम सिद्धं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्ध सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पत्त्याय भ्रामयामासाय उत्पत्त्य भ्रामयामास शिक्षेपाधरणे तले स क्षिप्तो धरणे प्राय मुष्टिमुद्दस्य वेगिता अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानि शिक्षेन छया ॐ तमायन्तं ततो देवी सर्वदत्तजनेश्वरं जगत्यापतयामास भिन्नात्सूलेन वक्षसि ततः गतासु स गतासु पुपातोर्या देवी शूलग्रविच्छतः चालयान सकला पृथ्वी साध्वीदीपा सर्पवतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मने जगतस्त्वास्तमित्पापं निर्बलं चाभवत्भयः उत्पातमेघा शुल्का ये प्रज्ञासते समभ्यो सरितो मार्गवानिस्त तथा शस्त्रा पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूव निर्हते तस्मिन् गन्धर्वो ललितं जुगः अवादत्यस्तथे वान्ये न नित्योश्चापसरोद्गणः बभूव पुण्यास्तथा वातः सुप्रभो भूदिवाकरः जिज्ज्वलाश्चानघस्वान्तः शान्ता दिग्गजनितस्वः ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे देवी महात्म्ये दशमोऽध्यायः एकादशोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बालरविन्दोते मिन्दो किरीटां तुङ्गकुचाननस्त्रयोक्तां स्मरे मुखि वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरा प्रभजे भुवनेशिम् ओम ऋषिरुवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रा सेन्द्रासुरा वहि परो गमास्तां कात्यायने तुष्टपुरेष्टलाभान्
विकाशिवक्कात्रब्ज विकासिता सा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेशरूपेण ततस्थितास्ते ओम अपां स्वरूपा स्थितया तवैमा दप्याये कृष्णमल यज्ञवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्ता स्तव देवि वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वय्यैकया पुरितमं वैतता का ते स्तुतिस्तवया परा करोति सर्वभूता तदा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुतास्तुते का वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनहृदय संस्थिते सर्वा स्वर्गापर्वदे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामदायिने विश्वेश्वरी परतोषक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता परित्राणपरायणे सर्वार्थसार्थी हरे देवी नारायणे नमोस्तुते हंसयुक्त विमानास्ते ब्राह्मणी रूपधारिणे कौशाम्बचरिके देवी नारायणे नमोस्तुते माहेश्वरी स्वरूपेण त्रिशूलचन्द्राहिधरे ओम त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणे नमस्तुते मयूरकुक्कुटे वृत्ते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणे नमस्तुते शंखचक्रगदाश्रांगा गृहीत परमाजुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणे नमस्तुते गृहीतो ग्रहचक्रेण दृष्टो धृत वसुंधरे वराहरूपिणे शिवे नारायणे नमस्तुते नरसिंही रूपेण गृहन्तु दत्तवान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण संहिते नारायणे नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले बृहत्प्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्तुते शिवदूतीश्वरूपेण हतदत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्तुते दृष्टाक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चण्डमुण्डे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिष्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमस्तुते मेधे सरस्वतीवरे भूति बाभ्रीवतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतदेव वदनं सौम्या लोचनत्र विभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकराल मृत्युग्रा मशेषार सरसूदन ओम त्रिशूल पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दत्त तेजांसी श्वनेना पूरिया जगत् सा घंटा पातु ने देवी पापेभ्यो न सुतानि वः असुरान् सभ्यसाप चर्चिते करज्ज्वलः शुभाय खड्गवो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पिहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वामार्षितानां न विपन्नराणां त्वामार्षितार्यास्यतां प्रयन्तीं यत्कृतं यत् कन्दत्वद्बाध्यं
धर्मं दिशा देवी महासुराणां रूपे नरेक बहुधा तमात्ममूर्ते कृत्वाम्बिके तत्पकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्ववाद्येषु वाक्येषु च वाचका वन्द्या ममत्वगर्ते तिमहान्धकारे बिभ्रामत्वे तदीव विश्वं रक्षासि यत्रो विश्य रक्षासि यत्रो ग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबला नियत्र दावानलो यत्र तथाम्भिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधा यशीति विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवति भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीदा परिपालनोरभीते नित्यं यथा सुरवदा ददुनैव सद्या पापानि सर्वजगतां प्रशमनं नयातो उत्पात पंक निताश्च महोपसर्गा प्रणतानां प्रसीदत्वं देवे विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामिति लोकानां वरदा भव दिव्य उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यस्योषिच्छत तं वृद्धं प्रवक्ष्यामि जगतामुपकारणं देवावोचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं मैश्वर्यविनाशनं दिव्य उवाच वैवस्वन्तरे प्रान्ते अष्टाविंशत्तमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवा वस्तुस्तेस्ते महाशुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरत्यातिरुद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यं हनिष्यामि वैप्रचिन्तास्तु दानवान् भक्ष्यन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचिन्ता महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिनीमुपकुशोपगा रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुपिशोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवा स्तुवन्तो व्यारिष्यन्ते शस्त्वं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या ममान्यवृष्ट्या च मन्वसे मुनिभिः संहृता भूमो संयुष्याम्यो निजाम् तथा सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कृत्यस्त्यन्तिमनुजा सताचेमिति मास्ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके रावृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्याति तदा यस्यायं भुवे तत्रैव च वक्ष्यामि दुर्गमख्यामाख्यं महाशुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुण्याश्चहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासे वक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मामुनियः सर्वे तृतीयस्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा दारुणक्यत्रैलोक्या महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शक्ये यत्कटकपदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महाशुरं भ्रामरे ते च मालोका सदा सत्योऽयन्ति सर्वतः इत्यं यदा यदा बाधा दानवत्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं
करिष्यामि शीर्षसंचया। ओम जय जय श्री पुराणे मार्कंडेय सांख्य त्रिदेवी महात्म्ये एकादशोऽध्याय द्वादशोऽध्यायं ध्यानः। ओम विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भेषणां कन्याभे करवालखेडविसितां हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दिव्य उवाच एभिस्तैवश्च मानित्यं स्तुते सा यः समाहिता यस्याहं सकला बाधा न शिष्याम्य संशयम् मधुकैटभवनाशं च महिषासुरघानतं किरयन्तिष्यामि एतद्वा वद शुम्भनिशुम्भयो अष्टायां च चतुर्दश्यां नवायां चेतसः सत्यन्ते चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किश्चित् दृष्टकोत्तथा चापुदः भविष्यन्ति च दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्या दस्यतो वा न राजत न शस्त्रा न लतो योगा कदाचित् भविष्यति तस्मात् महात्मत्वं पठित्यत्तं समाहिते श्रोतव्यं च तदा भक्त्या परम सुक्तनं हि ततत् उपसर्गानशेयास्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पात्यं माहात्म्यं समयेमयं मम यत्र पठते सम्यक् नित्यमायतनये मम सदा न स्वस्तिमोच्छामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिता बलिप्रदाने पूजामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमिच्छाचरितं मुच्चार्यं श्राद्धमेव च जानता वापि बलिपूजा तथा कृतं प्रतिच्छतेष्याहं प्रत्यावहे होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते आच वार्षिकी तस्या समये महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा महात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपुवः संशया याते कल्याण चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुष्पां माहात्म्यं शृणुताम् शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुष्प्रदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयाम्यहं मम उपसर्गामं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुष्प्रश्नं च निर्दृष्टं स्वप्रमाद जायते बालाग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातवेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषेणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वमत्महात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपश्च गन्धदीपैस्ततुत्तमे विप्राणां भोजनर्होम प्रोच्चारणेन विप्राणां भोजनर्होमे पृच्छ्रेयैर्हर्निशम् अन्यश्च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेणया प्रीतिमे क्रियते तस्मिन् सुत्कृच्च चरितं श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रेच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदत्त निहर्वणं तस्मिन् च्युते वैरिकृतं वयं पूषां न जायते उष्मा वा विस्तुतो याश्च ब्रह्मर्षि विकृता ब्राह्मणा च कृतायास्तु प्रच्यन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापे दावाग्नि परिव्यारिता
दस्यो विप्रावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहयाघ्रानुयातो वा वने वा वनस्तिवे राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघ्रपूर्णो वा तेन श्रुतिपोते महारणवे पतस्तो चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा स्मरेत्मृत्युचरितं नरो मुच्यते संकटात् मम प्रभावासी साहासाद्या दस्या वैरेमस्तथा दुरादेव प्राणन्ते समरं चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवार्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुविन्ताहारत्यः दैत्याश्च दिव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधे जगद्विध्वंसिने तस्मिन् मग्रो हेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायो एवं भक्त्या देवी सा नित्यापि पुनः पुनः शम्भोया कुरुते भूप जगता परिपालनं त्वय्येत मोहते विश्वं शैव विश्वं प्रसूषते सा याचितं च विज्ञानं तुष्टा वृद्धिं प्रयच्छते व्याप्तं त्वय्येत सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया शैवकाले महामारे शैव सृष्टि भवत्यजा स्थिति करोति भूतानां शैवकाले सनातने भवकाले शैव लक्ष्मीर्बुद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुतिशं पूज्यत्वां पुष्पधूप गन्धवास्तित्वस्तदा तदापि वित्तपुत्राश्च मते धर्मे गति शुभामं। जय जय श्री पुराणे मार्कण्डेय मनवंतरे देवी महात्म्ये द्वादशोऽध्यायः त्रयोदशोऽध्यायः प्रारम्भ। ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभेतिं धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिर्वाच एतते कथितं भूपं देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमाया तया त्वैव वश्ये च तथैवान्ये विवेकिना मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपैहे महाराजं शरणं परमेश्वरीम् आराधितां शैव निरडां भूपस्वर्गा परगोर्गदा। ओं मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुता च नराधिप प्रणिपत्य महाभाग तमृषे सतीव्रतं निविडो ते मत्वेन राज्यप्रहरेण च जगाम सद्यपस्तेपे सचवस्यो महामुने दर्दसार्थमाम्बाभ्यां नदी पुलस्त संसिता स च वैश्योत्पत्तेते देवी सुक्तपरं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्तिमहेयमतिम् अहरणां चक्रता तस्या पुष्पधूपात् तर्पणे निराहारो यताहारो तन्मस्को समाहितो तदत्तुष्टो बलिश्चैव निजगात्रा सुचुच्युतम् एवं समादायतो स्त्रियाभिर्थितात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका दिव्य उवाच यत्प्रार्थ्यं त्वभूप त्वं च कुलनन्दनं ममत्यष्टा प्राप्त्या सर्व परितुष्टा ददामि तदा। मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभ्रीश्वरजन्मने अत्रैव निजं राज्यं शत्रुहन्तो बलं बलात् सोऽपि वैश्यो ततो ज्ञानं बभ्रे निर्वीडमानसः मत्तेतमहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतकारकं दिव्य उवाच स्वल्पे रहो निर्भीपते
विश्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्मखिलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विश्रुत ॐ सावर्णिको नाम मनुभवान् सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वश्योऽयं त्वया यश्च वरोऽस्मतो विवाचितः तं प्रवक्ष्यामि संसिद्धे तं ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयो देवी यथाभिलषितं वरं बभूवार्तिहिता सद्यो भक्ता ताभ्या वितुष्टुता एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियर्षभा सूर्या जन्म साद्या सावर्णे भर्विता मनुः एवं दिव्यावरं लब्ध्वा सुरता क्षत्रियर्षभा सूर्या जन्म साद्या सावर्णे भर्विता मनुः ओम क्लीं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे देवी महात्म्ये अत श्री त्रयोदशोध्याय संपूर्ण दुर्गा सप्तशती संपूर्ण। इसके बाद हम लोग करेंगे उपसंहार का विनियोग, हृदय न्यासी जैसे पहले किए थे, करन्यास करेंगे, अक्षरनाश और दिंगनाश। फिर ध्यान करके फिर एक माला माँ भगवती दुर्गा जी का जप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार करना होता है। उसके बाद फिर करन्यास, हृदय न्यास, ध्यान, फिर प्रार्थना। इसमें हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी कर सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना तो ज़रूरी है। आप लोग क्षमा प्रार्थना अगर देखना हो तो हमारे अगले वीडियो में भी आप क्षमा प्रार्थना देख सकते हैं और उस प्रकार से क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तो बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।